वेलकम टू आवर शो वोकल फॉर लोकल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाउ इंडी ने ये डिसाइड किया है कि हम इंडियन स्टार्टअप्स और लोकल ब्रांड्स के बनेंगे वॉइस। तो आज हमारे इसी शो में हम आपको लेकर आए हैं लोकोमोको किचन में। जी हाँ, ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था पैंडमिक के टाइम ही, और आज हम आ पहुँचे हैं इनके किचन में। ये घर से खाना पकाते हैं और इसको डिलीवर भी खुद ही करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी वोकल फॉर लोकल में एक ऐसा ही किचन दिखाया था, तो आज चलिए आपको ले चलते हैं इस किचन में। लेट्स गो। हेलो मुकेश जी, कैसे हैं आप? हाय मैम। तो मुकेश जी, आज हम आपके किचन में आए हैं, लोकोमोको किचन में देखने। और क्या पक रहा है हमारे लिए? वेज बिरयानी बना रहे हैं स्पेशली आपके लिए। और इसके अलावा? समी कबाब जो बिल्कुल सिलबट्टे पे हम बना रहे हैं देसी स्टाइल में। ओह वाओ, ये शामी कबाब बन रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मतलब सिलबट्टे पे पीस रहे हैं आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो काफ़ी ओल्ड तरीका हो गया है। जी मैम, बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि एक्चुअली में अब जो शामी कबाब्स बनते हैं वो मशीन में मिक्सी में पीस लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे सिलबट्टा दिखा है। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी क्रिएटिव। और खुशबू, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए देखते हैं अब आप हमारे लिए बिरयानी और शामी कबाब कैसे बनाते हैं। हमने तेल डाला, इसमें प्याज डाले हैं, खड़ा मसाला डाला है। अच्छा, और ये अभी तड़का लगाया है आपने? अभी तड़का लगाया है। ब्राउन होने के बाद मैं इसमें मसाले डालूँगा। ओके। वेज बिरयानी है नॉन वेज? वेज वेज सान मसाला है। और मैंने वेज बिरयानी के लिए तैयार किया, इसे फ्राई करूँगा मैम। ओके। और पनीर टोस्ट करूँगा मैं। और फिर ऊपर से मैं फिनिशिंग करने के बाद आपको प्लेटें दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं, हम मुकेश जी को उनका काम करने देते हैं और देखते हैं ये कैसा खाना पकाते हैं। मुकेश जी, आप क्या तैयारी हो रही है? अभी मैं नॉन वेज मैंने तैयार कर दिया है। वेज के लिए चावल कर रहा हूँ। वेज का ये रहा। अच्छा, नॉन वेज बिरयानी भी है और वेज बिरयानी भी? तो बढ़िया बात है। मैं आपके लिए दाल मखनी कर रहा हूँ जिसमें मैंने बटर डाला है और ये मैं छौंक लगा रहा हूँ इसकी। अच्छा, दाल इज़ रेडी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए वेज और नॉन वेज बिरयानी दोनों रेडी हो रही है। साथ ही साथ दाल मखनी में भी अब तड़का लग चुका है और अब बस बहुत ही जल्दी से मैं आपको इसे टेस्ट करके बताऊँ।
So now we have Amanda and Sid, the faces behind this innovation Loco Moco Kitchen. So Amanda and Sid, welcome to our channel How Indie. And my first question will go to you, Amanda. When and how did you start this kitchen? So, I mean, we've been foodies since forever, since we were children, whether it was dadi's kebabs or dal makhani and, just recipes that have been passed down since forever. That now Moko, our chef Mukesh, has really learned to perfect. And just through, like a lot of years of trial and error, because food has been such an essential part of our family dynamics. We started Loco Moco because we wanted to share that with other people, and the best way possible Indian Mughlai. So that is how we started Loco Moco. So Loco is crazy, Moco is Mukesh, crazy Mukesh and his crazy food. So amongst both of you, who actually, wanted to start this innovation? I think that was Sid. This was Sid. So the question goes to you. How? I would actually say it was both of our idea. It just came out of the blue since we feel our chef Mukesh is so talented. We felt that we should share it with everyone. And it was just out of the blue, yeah, let's do it kind of a situation. So you started this kitchen at the time of pandemic, right? Yes, of course, we'd been planning from earlier. And it came into action during this pandemic, yes. Who's more foodie between both of you? Sid. Okay, so next question goes to you again. How do you manage all the deliveries and all the food cooking, and who decides the menu? To decide the menu, we do call a few of our close friends over and have them try and test out our new recipes and new dishes. And if they like it, we put it on our menu. And we change our menu sometimes weekly, sometimes monthly. And the delivery is made in-house by our driver actually, who delivers the food himself, so that it's all safe. Yeah. So you have any plan to go with the Zomato to book this kitchen on Zomato and Swiggy? As of now, I would say no, because when we started this, the biggest thing for us and what people told us is the reason why we trust you is because we know it's coming from a home kitchen. It's our staff who helps Mukesh make the food. It is our drivers who go and deliver the food personally. And I think the lesser people involved, the more safer it is, because the more precautions we want to take, and we are very hell-bent that it will be of the utmost safety standards. So, everything is in-house, and I think that is the main reason why our customers feel so safe. Like, people have actually told us this is exactly why we feel safe and comfortable ordering from you during this time. So, definitely not in the plan in the near future. But As I can see, you're getting even very good reviews on your Instagram, right? we've been getting great reviews. Like I told you before, our chef was clear कि एक बार हमारा खाना कोई खाए, वो दूसरी बार मंगाएगा ही मंगाएगा. And that is exactly what happened. We had a lot of random people who got back to us and really loved our food and had really amazing things to say about it. And of course, we didn't tell them to put up stories, etc. Like, it all happened very organically. So we were very, very pleased with the response that we got. Do you want to convert it into a cafe later, or do you just want to carry it on from your home only? बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि अब लोको मोको का क्या plan है and what's the goal for the next 3 to 5 years. And I would just say I definitely don't want to commercialize it and turn it into a restaurant, क्योंकि who right now is waiting to go out at a restaurant and eat publicly? Now, the mindset of people has changed. They want to be at home. They want to feel comfortable in their own space and not harm their safety in any sort of way. और मुझे लगता है this is why Loco Moco is so great, because it's coming straight from our kitchen to you using traditional, unique recipes that have been passed down generations, and it has that very essential taste. And again, considering COVID times, you want people to feel safe and comfortable and really empower India and its cultural taste. And I think that's why I think what these guys do is so great. I think vocal for local, How Indie. And How Indie is so awesome because they're providing free advertising, for small startups like us
who today really need their help to get the word out and have that reach and reach our target audience that we would not have been able to do so ourselves. So I think kudos to them to really give us a chance, and considering we've only been in operations a month, to reach out to us and really provide us with this platform, to help us serve foods to hundreds and hundreds of people who I am absolutely sure would love it. So big shout out, thank you guys so much, and it's really, really appreciated. All the power to you. So I think enough of talking. Now I'll try the food and let you know how it tastes. So guys, I have dal makhni, chicken biryani and shami kebab, and I'll let you know how it tastes now. I'll go with the dal makhni first. It tastes nice. Actually does. बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हम बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं रेस्टोरेंट से. टेस्ट बिल्कुल ही वैसा है. घर के खाने से बहुत अलग और अच्छा है. शामी कबाब आर ऑल्सो वेरी स्मूथ, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी. प्लस सॉल्ट वगैरह भी सब एकदम बढ़िया है. तो आई गेस यू शुड ट्राई दिस फूड फ्रॉम लोको मोको किचन एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लव द फूड हियर. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमारा ये शो वोकल फॉर लोकल पसंद आया हो, so do let us know in the comment section below, and also you can follow Loco Moco Kitchen on the Instagram and Facebook, right? Instagram, Loco Moco _kitchen. Yes.